Hello, friends. Welcome to BI7 Analytics. And I just wanted to start this live by uh, basically quickly telling something about the aptitude in the data field. So, yeah, so it doesn't have much of introduction. I will just quickly jump into what I have to showcase. Yeah, so let me just share my screen once. Okay, so I was talking about aptitude. एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा के फील्ड में। तो हमें बेसिकली ये जानना है कि विच एवर फील्ड यू कम फ्रॉम, यू नो, इट माइट बी कि आप एक डेटा एंथुसियास्ट हैं, आपको डेटा के फील्ड में आना है, बट हाउ टू गो अबाउट इट, राइट? व्हाट इज द राइट स्टार्ट? सो आई वुड से द राइट स्टार्ट इज अंडरस्टैंडिंग कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। सी बहुत सारे फोक्स का जो बैकग्राउंड होता है वो प्रिटी मच डिफरेंट होता है, राइट? We are people who are coming from business family. Some of them, we have our parents having shops, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, किसी का किसी चीज़ का बिजनेस है, तो हमारा बिजनेस एक्यूमेन प्रिटी मच स्ट्रांग होता है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम सप्लायर से सामान ले रहे हैं और उसको फिर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं और फिर आगे कस्टमर्स को बेच रहे हैं। सो कस्टमर की क्या मेंटालिटी है, पैसा किस तरीके से सप्लायर को दिया जाता है, कस्टमर से लिया जाता है, द ओ टू सी पी टू पी पार्ट ऑफ इट हम लोग बचपन से जानते हैं। मे बी वी डोंट नो द टर्म्स, बट हमारा बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। तो दैट इज वन एप्टीट्यूड वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो इफ यू look at this slide, right, there are basically three ways from which we can understand how we can enter into the data stream. हम सबको डेटा एनालिस्ट बनना है, राइट? डेटा एनालिसिस करना है आगे चल के, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वी अंडरस्टैंड कि हम किस एप्टीट्यूड के साथ उस फील्ड को एंटर करना चाहते हैं, राइट? सो एक मैंने बिजनेस एक्यूमेन की बात की, सेकंड इज डेटा एनालिस्ट का एक्यूमेन। सी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर डेटा को फ्रॉम अंडरस्टैंड करना फ्रॉम द स्कूलिंग टाइम्स, ये ये जो है बहुत हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है नहीं। तो डेटा एनालिसिस का कोई एक नेचुरल एक्यूमेन होना ये पॉसिबल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, कुछ लोग होते हैं जिनको डेटा से खेलना बहुत पसंद है। उनमें एक नेचुरल फ्लेयर है कि मोमेंट दे हैव एक्सेल इन देयर हैंड, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, मुझे उसको क्या चीज़ों को समराइज करना है, कैसे पिवट लगाना है, किसके वाइज क्या डेटा देखना है। तो वो एक एक्यूमेन हो सकता है। मे बी वो एजुकेशन के टाइम नहीं, बट आपके अर्ली करियर में आपको मिल जाए। ओके, इट कैन हैपन दैट वी हैव एनालिस्ट्स जो कि एमआईएस का काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस का काम कर रहे हैं। So those sort of people, those folks are pretty much, aware of dealing with Excel, dealing with data as such. So ये data analysis का acumen है, right? This is a natural propagation towards a career into data analysis, you know. थर्ड होता है कि जो हमारा नॉर्मल है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डेवलपमेंट का आपका फ्लेयर है, आपको कोडिंग करना पसंद है, यू वांट टू डू द coding in Java, C++, or Python and stuff, right? And you want to develop application-based solutions. तो आपको बेसिकली डेटा एनालिसिस के बारे में पता नहीं है, करना नहीं चाहते हो, बट ये भी आपका एक एप्टीट्यूड हो सकता है। लेटर ऑन इन योर करियर यू माइट फाइंड अपॉर्चुनिटी, और यू माइट जस्ट want to switch into data analysis. So these are the three kind of acumen you should or aptitude you should think about. So you have to basically discover, the start has to be with aptitude. Discover what aptitude fits you, right at this moment. And then you have to basically develop your core expertise. So it is important कि आप
डायरेक्टली जंप ना मारे, डायरेक्टली जंप मार के सीधा डेटा एनालिसिस के फील्ड में ना जाएं, बल्कि अपने एक्यूमेंट से अपने एक पिलर को स्ट्रॉन्ग करें। सो इफ आई से कि ये कहाँ पे लीड करता है, तो ये वन ऑफ द आपका एक वन ऑफ द पिलर्स हो सकता है, राइट। सो आप बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो, यू कैन बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट फॉर a year, 2 year, 3 years, and then get into data analysis. You can be an MIS person working on spreadsheets for many years, and then get into data analysis. Or you can do hard code application development, coding, and then get into data analysis. तो अपने अपने पिलर को आप स्ट्रॉन्ग करिए, डेवलप, बिल्ड योर कोर एक्सपर्टीज, एंड ऑल ऑफ देम will basically lead you into, when you integrate everything together, it will lead you to business intelligence. Now this is important. हमारे अगर इंडिया में हम कहें, हम लोग सब डेटा एनालिस्ट बनने के दौड़ में जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज समहाउ द रोड मैप इज लिटिल बिट सुपरफिशियल। हम थोड़ा सुपरफिशियल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। किसी ने थोड़ी एक्सेल सीख ली, किसी ने थोड़ी पाइथन सीख ली, किसी ने थोड़ा सीक्वल सीख लिया, कोई सीधा पावर बीआई के ऊपर डेटा को ड्रैग करके छोटे छोटे चार्ट्स बना के दे आर थिंकिंग दैट डेटा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, बट नहीं, देयर इज एन एंटायर रोड मैप टू इट, इंटीग्रेशन पार्ट टू इट. And when I say BI, when you can call yourself a BI analyst, is when you are able to give that insight which actually makes a difference. जब वो insight आपकी organization, आपकी company में ऐसे changes ला रहा है जिससे company is able to get profitability, or it is able to basically make some decisions which are basically strategic in nature, तब फिर हमको समझ में आती है कि yes, we have actually quite made a difference. So we can take an example कि organization आपकी normal 3% 4% के growth rate के साथ चल रही है, and you come in, you study the data, you apply your business acumen, you apply your data analysis skill, you understand that there are certain data points which are missing, and I need to get into the engineering stuff of it to get that data point. वो डेटा पॉइंट निकाल के आपने एक सिंगल की इंसाइट ऐसी दी जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डिसीजन पे निकला कि हाँ, नेक्स्ट ईयर हमको ये सेट ऑफ प्रोडक्ट्स को बेचना ही नहीं है, बिकॉज इसके वजह से हमारी रेवेन्यू गिर रही है, या फिर हमें इस टेरिटरी के अंदर अपने आप को फोकस करना है. वी हैव देयर इज अ नीड, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर इन दिस टेरिटरी which can be tapped upon, right? और वो की इंसाइट का कोई भी लॉजिकल रिबटल नहीं है, वो रिफ्यूज नहीं हो सकता है, बिकॉज यू हैव मेड इट श्योर दैट द डेटा बेसिकली टेल्स कि हाँ, यही ट्रुथ है, राइट? एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव टिक्ड अप all the boxes, right? You know that business study और business analysis says कि ये टेरिटरी राइट है. इंजीनियरिंग डेवलपमेंट से आप राइट डेटा, एक्यूरेट डेटा को लेके आए हो, और आपने जो एंटायर एनालिसिस की है, राइट, उसको डिराइव करने में, उसमें भी कहीं कोई गलती नहीं है. सो देयर इज हार्डली अ पॉइंट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन माइट से कि नहीं, दिस इज रॉन्ग एंड वी शुड नॉट डू इट. And that is what is your achievement. That is what you want to achieve as data analyst. So moment you do that, you enter into this territory of basically conquering the business intelligence domain, PI domain को आप conquer कर जाते हो. और यहाँ पे जब आप conquer करते हो, then comes those tools where you basically tell the story. You use Power BI, Tableau of the worlds to basically present your story, right? You showcase की pain area कहाँ पे है through those beautifully created charts, drill downs, and which basically the board understands कि हाँ, ये basically right चीज बताई जा रही है. And once it is done, then the elevation happens, right? You want to do it time again and again with not just one single key insight. You want to do it for multiple insights. You just don't want to have only the structured data build the story for you. You want unstructured data also to build story for you. You want
not the only the actuals, but you want insights from outside world, and there is where AI comes into picture. और वहां पे जाके आप BI लेवल के enterprise solutions banana start karte ho. You become a BI architect, right? This is a roadmap. From business intelligence, now you are transforming into an enterprise-wide BI architect, right? यहाँ पे आप वो लेयर्स बनाते हो जो इन सब चीज़ों को मिला के रियल टाइम इंफॉर्मेशन और ऐसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू द राइट पर्सन प्रोवाइड करता है कि दे कैन मेक decisions faster, accurate decisions which are in line with the mission and vision of the company, uh, you know, and that is what is going to help, right? So there is where you transform from BI to an architect. And finally, what you would want to achieve. You want to basically see yourself at the top of the pyramid as someone like a chief data officer, right? So when all of this is in place, then what is left is orchestration. What is left is governance, the policies, the SOPs, the roles. And that is the most important layer nowadays. Compliance kya hona chahiye, security, privacy, data strategy. And that is the job of a chief data officer, a CDU. And that is actually the roadmap of a data analyst, right? So we have to we just don't have to walk the road so that hum data analyst ban jaye. We have to walk the road thinking that it will lead you someday to be a chief data officer, right? You are deciding on the policies, how the data basically flows into the organization, right? So this is the entire roadmap for each one of you. I think that this session would have helped you and would have really, given you one key insight that it all starts from aptitude, which you need to basically discover. You need to basically discover your aptitude right now. Where do you stand? Whether you have business acumen, आपके पास business acumen है, आपके पास data analysis का acumen है, या आपके पास engineering acumen है. And I would recommend that you work on it and build your core expertise. And then once you are done with this, you will be in a better position to basically uh, uh, complete this journey all the way to a chief data officer. Thank you. Thanks for joining this. Thank you.